ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Let's rub our both palms together and gently place them over the eyes. Namaste. A warm welcome to all of you on this orientation and interaction session, which is going to be handled right now. तो आप सभी का स्वागत है इस छोटी सी इंटरेक्शन सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए हमें किस पार्ट्स पे मेजरली फोकस करना होता है और हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं इन दिस एंटायर 1 month क्रैश कोर्स ड्यूरेशन. Right. So with this, let me start off by having a short introduction of the faculties which will be there throughout the process of this 1 month course content. Right. So आप जानते होंगे कि पेपर 1, पेपर 2 दो सब्जेक्ट्स होते हैं यूजीसी नेट में, and here we have taken the full crash course coverage of paper 2 as well. Paper 1 तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ paper 2 भी. And for that we have with us paper 1 specialized coaching, live classes, live class lectures given by BTech computer engineer student who has become a faculty right now and who is also qualified as a UGC NET JRF with the percentile of 99.74, MSc qualified from University of Patanjali and currently pursuing PhD in yoga science. Apart from that, we have with us another faculty who is well equipped with the paper 2 content. Paper 2 content को आपको बहुत ही अच्छे से deliver किया जाएगा, and the specialty is that the person is qualified with the percentile score of 99.96. That's a very high score. So PhD, currently pursuing PhD from yoga science field from University of Patanjali, MSc in yoga science, and that topping the entire academic curriculum during the MSc, Sir Pintu Mehto, and having done BSc from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, the entire course is being so very well been designed so that we give you the best output with minimum efforts put in from the students point of view. आप जानते होंगे ये 1 महीना बहुत ही crucial रहता है. हालांकि there is some डावाडोल स्थिति of whether there is any impact being put up by the corona, तो वो तो हम साइड में रखेंगे, but we'll prepare ourselves at the maximum best level, right? तो आपको यह लाइव क्लासेस जो प्रोवाइड करी जा रही है उसमें मेजरली we will focus upon the relevant content. See, there is so much content out here. बहुत content आपको freebie में मिल जाएगा, but it's very necessary that we focus on it when we streamline the content and we focus on the necessary parts, right? So यहाँ पे आपकी यहाँ there is always a like guidance being given by the teacher. There is one-to-one interaction session when during the live classes. Also, apart from that, self-assessment test से आपको अपना progress measure करने को मिलता है, which helps to make sure that you are on track during this entire 1 month journey, 1 month crash course. बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाकी के महीने इतना पढ़ते नहीं है, but this 1 month we have to drill in fully ताकि output अच्छे से मिल पाए. Whatever efforts we put in this month, this crucial month, is going to come up as an output. और हमने पहले भी हमारा 1 month crash course कर चुके हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, and we had got a very good result with a very short span of time. So we are going to discuss all that in the coming time. However, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि
आप हमारे साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन में बने रहे इस जर्नी के दौरान, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दिस गुरु शिष्य परंपरा एंड वी are here to solve your doubts. You need to also help us in asking the doubts, right? So here we are equipped with the best live classes, content material at an affordable rate, backup videos, class notes for your reference. अगर आप बीच में live class नहीं कर पाते हो, we have the recording available for you. So once the live class is done, वो record हो जाती है और वो ड्राइव में आपको फिर बाद में रेफर करने के लिए रहती है. सो दिस कंटेंट इज देयर फॉर यू फॉर द लाइफ टाइम. Then apart from that, the content is delivered in a PowerPoint presentation method. So this makes sure that it is very much lively. Okay, it's very important that learning process बहुत ही interesting रहे. Finally, आप भी एक टीचर बनने वाले हो. You are going to be an assistant professor after clearing UGC NET JRF. So it's very important that we have this affinity towards knowledge. Finally, philosophia, PhD करने के दौरान, it is said that we have to fall in love with the knowledge, what we are learning, right? तो यहाँ पे आपको बहुत ही रोचक तरह से सिखाया जाएगा कंटेंट को. साथ ही साथ ये गारंटी होती है कि आप बोर ना हो जाए इस entire process. That's why we have the live classes. We have the live classes from Monday to Saturday in this 1 month crash course, and Sunday आपको टेस्ट दी जाती है. So you are drilled in throughout the 24/7. Okay. यहाँ पे you have the online test series, completely typed and well verified content material, question and answer session, and also we have the Lakshmi ji, yes, doubt busting sessions. So let me just make some arrangement. Yes. So and सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको dedicated faculty available है to solve your doubts. We are very much approachable. You can ask our students as well. So they will actually tell you how approachable and how easy it becomes to actually solve your doubts at your own possible time. So there are quite a few videos also discussing about the feedback from the students who have already cleared JRF through the coaching. So सबसे important चीज है UGC NET JRF अगर आपको clear करना है, it's very important that we limit our resources. We limit our resources. There are so many, but these 30-35 days are very crucial, and we have to make sure that जो भी हम पढ़े उसका हमें दुगना आउटपुट मिले. So it's very important that we streamline our course, और जो भी हम पढ़े उसको अच्छे से पढ़े, right? So less is more. Less is more. Practicing and analyzing mock tests, very important. ये एक बहुत important पड़ाव होता है जिसमें student अपने आप को, अपनी progress को measure कर पाता है. And here we have made it so very easy for the students to actually analyze their progress, that they are actually able to get the tests, get the responses, feedback of the test, and thereby check. And in fact, even हम teachers को भी ये platform available है which helps us to actually analyze where is the progress of the student. So depending on the overall tests being solved by the student, it becomes very easy for us also to check कि हमारा approach student की तरफ से कितना अच्छे से grasping हो रही है या नहीं हो रही, right? So apart from that, the third tip, revision is the game changer. Revision is a very, very important, crucial part in the preparation, because जो आप पढ़ने वाले हो इस 30 दिन के दौरान, ये आपको इतना अच्छे से समझना है, इतना अच्छे से रटना है और इतना अच्छे से ड्रिल करना है ताकि एग्जाम में you don't spend your time in thinking like what is the answer of this question. So it's very important that we try to revise the content and make up or reproduce the answer based on, if अगर थोड़ा बहुत out of the track भी आ जाए तो आपको reproduce करने की मंशा होनी चाहिए, right? So it's very important that you revise the content.
So after having done these 3 parts, just want to mention कि ये course content के लिए we have a very limited seats because we want to have a very focused attention. अब इतने सारे बच्चों के phone calls थोड़ी attend कर पाऊंगी. So it's very limited course content, and also enrollment limited है. And if you have any personal doubts, you can definitely get it clarified from the students. Yes, so ये मेरा certificate है. And let me now discuss in brief about paper 1, and then we'll move to paper 2, and we'll start with the paper 2. Okay, so we'll start ताकि आपको उस दौरान ये एक्चुअली पता भी चले कि क्लास किस प्रकार से होती है. Right, so let me first tell you in brief about paper 1 course content. So paper 1 course structure is so meticulously designed. ये कितने अच्छे से डिवाइड किया गया है कि हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चंस बनते हैं. आप जानते होंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं. There are 10 units. Out of these 10 units, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस बनते हैं. So you cannot skip any unit. Definitely cannot. So it's very important that we learn these small crux and tricks to actually help this understanding much more fruitful. So let us now have a quick overview. So teaching aptitude में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से questions बनने के chances हैं. So all those theory and analysis point of view से questions किस प्रकार से बन सकते हैं, इस पे चर्चा होगी. Will be solving, and you'll be also given the mock test to get it clarified. Apart from that, research aptitude, one of the very important topic. Research aptitude is a very fundamental topic during a PhD. आप जानते होंगे कि PhD के दौरान research aptitude ही आपका main subject होता है. तो ये विषय न केवल आपको इस यूजीसी के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो इट विल हेल्प यू सेल थ्रू द पीएचडी एज वेल. राइट, सो पीएचडी के दौरान भी इट विल बी very इफेक्टिव फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड देयर बाय गेट इट क्लैरिफाइड. सो हियर रिसर्च एप्टीट्यूड में हम आपको मेजरली शोध से रिलेटेड, शोध की प्रक्रिया से रिलेटेड, which are the important terms, terminologies, all the aspects would be taught to you and would be explained in a very meticulous way. Apart from that, reading comprehension. Reading comprehension में हम majorly बात करते हैं regarding the aspects related to the passage, all those things. So वो आपको tricks भी बताए जाएंगे कि किस प्रकार आप passage reading बहुत fast कर सको and thereby solve that passage in a much more faster way. Apart from that, communication, very important, right? So we cannot skip that. Communication में भी हम आपको वो major important tips and tricks सिखाएंगे which will help you to actually understand the psychology behind communication techniques, psychology behind communication, effective communication, and all the major aspects, all the major definition and terms related to that. And reasoning, very important, can't be skipped. Mathematical reasoning, logical reasoning, ये एक important questions है जिसपे आपको वहाँ पे at that moment you have to actually try to find the best fit answer trick, right? So that point आपको आंसर आने के लिए it's very important that we have some homework being done. So the content is being so meticulously designed that it will be very easier for you कि आपको एक sum आएगा, you'll be given some problem, you'll be able to understand which technique to be used for that. So there are basically different fundas available that would be explained. Data interpretation cannot be skipped. Data interpretation में बहुत students मार खाते हैं इस perspective से कि डर लगता है. वो डर ही हटाने का सबसे मेन कार्य होता है कि आप उस फॉर्मूलेस को, उन फॉर्मूलेस को टैकल करना सीख जाओ जो आपको क्लास के दौरान सिखाया जाएगा. और मेजरली बात तो यही है कि हम अगर डेटा को इंटरप्रेट करेंगे अच्छे से तो फाइनली आसान हो जाएंगे. और आप तो जानते ही हैं 5 क्वेश्चन तो बनते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड.
सो अगर आपको फर्स्ट वाला सही आ गया, आप समझ गए, सेकेंड वाला भी अच्छे से समझोगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द funda associated with that. Then information and communication technology, one of my very favorite topic, and even I'm going to start off with that topic. मेरा खुद बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का रहा है एंड दिस इज वन ऑफ माय वेरी क्लोज टॉपिक. सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में हम मेजरली डिस्कस करते हैं ऑल द करंट एज वेल एज द प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द आईसीटी. एंड यहाँ पे आपको कोरिलेट किया जाएगा फ्रॉम द डिजिटल इंडिया initiatives which have been taken and all those things so that आप updated रह सको ताकि questions जो आए उसको आप अच्छे से आंसर कर पाओ. Then people and environment, very important because it's very it's something which is very close to us, right? Environment. तो जो भी घड़ामोड़ी जो भी हमारे वातावरण में जो भी ऊपर नीचे पार्ट्स, इश्यूज, न्यूज दिखते हैं उनका किस प्रकार से कोरिलेशन करके हम हमारे एनवायरनमेंट टॉपिक से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस होते हैं. साथ ही साथ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर आल्सो बीन ड्रिल्ड इनटू द स्टूडेंट वेरी वेल. Higher education system, yet another very important topic, can never be skipped because unit 10 आपके जैसे होता है last but not the least, because finally we all are going to be teachers और teachers are going to be a part in the university और जहाँ भी हो, but we need to be having a very good base of education system. So higher education में आपको वो सारे essential points, tricks and subject theories बताए जाएंगे which have got the proximity of coming into the paper. Majorly it's the syllabus. Syllabus is the key. So first day मैं चाहूंगी कि आप अपना syllabus side में रखो. When we are going to start, syllabus side में रखिए notebook, एक notebook, syllabus, pen and that's it. Screen तो आपके सामने होगी ही. And the classes are going to be starting sharp time, right? So here this is about the paper 1. Let me move you to the paper 2 quickly because we are going to actually start with the paper 2 right now. और paper 2 में आपको let me tell you that this content is so very well designed that it will help you not only understand from the academic perspective but also actually use it in your practical knowledge. आप जानते होंगे कि योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है, निगड़ित है, राइट? तो आप भले योगा प्रैक्टिशनर एज अ पार्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये कंटेंट आपको एक निखार देगा ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को भी वो नॉलेज दे सके, राइट? सो फाउंडेशन ऑफ योगा, बेसिक योगा टेक्स्ट, उपनिषदा, भगवद गीता, वशिष्ठ संहिता, Patanjali Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, then allied sciences including the dietetics, nutrition, yoga therapy, then yoga and health, therapeutic yoga. Allied sciences also include the anatomy, physiology, then applications of yoga, practical yoga, methods of teaching yoga. They all pertain to making us a very good holistic learner of yoga. So even those who are just having this interest, the keen interest in learning, they can also go for these classes क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक cutting edge देता है ताकि आप आगे as a instructor भी काम कर रहे हो, you'll have this base, this standard base which will help you actually make the narration much more easier, right? So key points. Paper 1 जो है ना, इन दोनों में paper 1 का खासियत ये है, it's a very scoring paper. It needs less effort as compared to paper 2. Less syllabus, always follows the pattern. Repeated previous question years papers is the key, right? तो पेपर 1 की खासियत ये है कि यहाँ पे वो पैटर्न से बहुत ही स्टिक है, बट पेपर 2 में ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ऐसा नहीं है पेपर 1 में. पेपर 1 का सिलेबस भी कम है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फंडा, हाउ टू actually approach the particular question. Approach is very much important.
If we have a right approach, we'll be able to tackle the questions related to that particular unit, right? So repeated question years papers, repeated previous years question papers से आपको अंदाजा आएगा कि किस प्रकार से एक्चुअल में जो पेपर सेटर है they frame it. So it's freehand, it's there in the drive also. You can actually check out कि किस प्रकार से papers are being set to actually make the students understand paper one concepts thoroughly. Okay, so डो नॉट फियर, प्लीज घबराएगा नहीं पेपर वन से. बहुत जने का दिक्कत ये होता है कि पेपर टू तो अपना सब्जेक्ट है, इट्स द सब्जेक्ट विच वी हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मास्टर्स एमएससी. पेपर वन का क्या करें? तो पेपर वन का चिंता ना करें. पेपर वन इज एक्चुअली वेरी इजी. इफ यू ट्राई टू हैव अ गुड अप्रोच, इफ यू ट्राई टू हैव अ प्रॉपर अप्रोच, यू विल बी एबल टू हैंडल इट विथ वेरी मच ईज एंड कंफर्ट. ठीक है, लेट इज नाउ मूव टू the major key points or the targets which we help you to approach the paper one or paper two contents. So preparation बहुत अच्छे से रगड़ के कराई जाएगी. Full focus on the paper one. अगर paper one ही ले रहे हो तो do not skip single day without studying paper one. इसीलिए हमारी क्लासेस भी आपको मंडे टू सैटरडे होंगे. ओके, एंड पेपर वन टाइमिंग इज एट 3 p.m. to 4. It might extend to 4:30 if the students come up with the doubts. Yes, तो हम वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स भी अपने डाउट्स क्लियर कर सके ड्यूरिंग द प्रोसेस. डू नॉट स्किप द क्लासेस, लाइव क्लासेस. अगर स्किप हो जाती हैं तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं. यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स डेफिनेटली, बट इट्स ऑलवेज बेस्ट if you join in live. However, you can approach to us by the voice message or the textual message and we'll come back to you. Set a target of 80 plus in paper one. It's not impossible. Please have this mental opinion that yes, you can do it. अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना तो हर चीज आसान है. Start with easy units. Easy units से, और जो आपको likely है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग पकड़ है, उससे स्टार्ट करिए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ते जाए. राइट, इंक्रीज योर लेवल स्लोली एंड फुल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स इज अ मस्ट, राइट, एंड स्टे अपडेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट. वात्साल तर वात्साल, देयर इज अ कहावत इन मराठी. We have to keep ourselves reading and learning and things, so that's the key, right? So yes, these are our star performers who have cleared their JRF. So we've had a crash course previously. वो दिसंबर का जो पेपर हुआ था ना, उसके रिजल्ट्स है ये. एंड इट्स वेरी वेरी a good feeling for all of us, all of the faculty members, to actually have the success being experienced by students when they actually when they told us during the orientation. आप चाहे तो YouTube पे देख सकते हैं. There is the video wherein all of our staff members have actually spoke about their own experience. See, when you learn from the horse's mouth, it becomes much more easier, right? तो जब वो खुद आपसे उन्होंने बात करी है during that crash course orientation, it will be very much easier for you to actually understand how we approach and how you should be approaching towards this very very important and interesting paper. ठीक है, तो इंटरेस्ट बनाए रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और आपको क्लासेस में रेगुलर रहना ये आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है, कीप अपडेटेड, कीप रेगुलर, बी रेगुलर ड्यूरिंग द क्लासेस. अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते लाइव, कोई बात नहीं, डू योर स्टडीज रेगुलर. सी, क्लासेस आपको मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू रेगुलरली अंडरस्टैंड एंड स्टडी डूइंग दैट. या, सो लेट मी नाउ make a start of unit 1. okay, yes, unit 1. so let me just stop share, और मैं अभी आपको पेपर 1 तो नहीं, पेपर 2, we'll start with the paper 2 unit. पेपर 1 3 बजे होता है, so it will be starting from tomorrow. yes,
Let me